बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर नेक्स्ट लेक्चर। आज के लेक्चर में हम कंप्यूटर आउटपुट डिवाइसेस के मुताबिक डिस्कस करेंगे। कुछ हमने डिस्कस कर लिए अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर, और जो रिमेनिंग हमारे पास कंप्यूटर आउटपुट डिवाइसेस हैं उनको हम आज देखेंगे। साउंड आउटपुट डिवाइसेस, द फर्स्ट वन, स्पीकर्स और हेडसेट्स हम आमतौर पर यूज़ कर रहे होते हैं साउंड आउटपुट के लिए। स्पीकर्स और हेडसेट या आपके हेडफोन्स किस तरह से काम करते हैं उसकी वर्किंग को हम थोड़ा सा देखते हैं। दीज आर द आउटपुट डिवाइसेस दैट प्रोड्यूस द डेटा इन द फॉर्म ऑफ वॉइस। इस स्लाइड में हम देखेंगे कि किस तरह से स्पीकर ऑपरेट करता है। जब एक स्पीकर या एक बोलने वाला बंदा बोलता है तो सिग्नल जो है तार से ट्रैवल करके स्पीकर तक जाते हैं, और ये सिग्नल अमूमन एनालॉग फॉर्म में होते हैं, डिजिटल फॉर्म में नहीं होते हैं। और स्पीकर्स भी मोस्टली एनालॉग सिग्नल को ही प्रोसेस कर रहे होते हैं। हाउ डू डू प्रोसेस द सिग्नल्स, लेट वी लुक एट दैट इन डिटेल। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक ड्राइवर पार्ट है जो कि एक मकनातीस होता है, मैग्नेट। और जब सिग्नल्स यहाँ से मूव करके आते हैं तो एक तरफ से अगर सिग्नल दो कॉइल्स पे आएंगे, अगर वो एक कॉइल पे आएंगे तो आपका जो आगे उसका स्पीकर के आगे जो लगा होता है एक कपड़ा नुमा या एक कवरिंग उसकी होती है, वो आगे को दब जाएगी। और अगर सिग्नल दूसरी तरफ से आएंगे तो वो पीछे को दबेगी। एक्चुअली ये जो रॉड जिसको हम ड्राइवर बोलते हैं, इसको अगर एक तरफ से सिग्नल आ रहा है तो वो साउथ नॉर्थ में, और अगर दूसरी तरफ से आ रहा है तो वो नॉर्थ साउथ में वो बन जाता है। और उसकी वजह से आगे मेटल शीट जो लगी होती है वो या तो अट्रैक्ट होती है या वो उसको जो है वो परे धकेला जाता है। इस तरह से उसमें वाइब्रेशंस क्रिएट होती हैं, और ये वाइब्रेशंस क्रिएट होकर हवा के ज़रिए मूव करते हुए हमारे कानों तक आ जाती हैं। साउंड आउटपुट डिवाइसेस, स्पीच जनरेटिंग डिवाइसेस या वॉइस आउटपुट कम्युनिकेशन एड्स, वोका और SGD, portable electronic devices that allow people to create a message and produce speech. What does that mean? इसका मतलब ये है कि आप लिख के उसके अंदर मैसेज डाल दें या किसी और तरीके से मैसेज डाल दें तो वो डिवाइस बोल के यूज़र को बता देगी कि क्या कहा गया है। These are augmentative and alternative communication devices, methods which are used in these devices. These are used as a communication system for people with little or no speech. यानी वो लोग जो बोल नहीं सकते हैं लेकिन बहरहाल वो लिख सकते हैं या किसी तरह से कम्युनिकेट कर सकते हैं। जैसे कि हमने पिछली स्लाइड्स में स्टीफन हॉकिंग की एग्जांपल ली थी, तो उनको ये एड कर देते हैं, और जो कुछ वो उसको किसी दूसरे तरीके से इंफॉर्मेशन के तौर पे प्रोवाइड करते हैं, यहाँ से उनको बोल के उस इंफॉर्मेशन की आउटपुट की जा सकती है, वॉइस आउटपुट बनाई जा सकती है। दे कैन असिस्ट बोथ लैंग्वेज comprehension and expression, helping to enable communication access for all. A variety of systems are available, varying from simple to highly sophisticated and offering different features, including कौन कौन से features available हैं जो मुख्तलिफ devices available हैं उनके अंदर। Digitized human quality recorded or synthesized computer generated speech output, यानी कंप्यूटर स्पीच को हम दो तरह से जनरेट कर सकते हैं कि नंबर वन, कोई इंसान बोले और उसको हम डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर लें जिसको हम डिजिटाइजेशन कहेंगे, और दूसरा ये है कि टेक्स्ट में लिखा हुआ हो या किसी और फॉर्म में आपकी इन्फॉर्मेशन मौजूद हो और उससे वॉइस बेस्ड क्रिएट कर दिया जाए या उसको ऑटोमेटिकली बोल के दिखा दिया जाए। इसको हम कहते हैं सिंथेसाइजेशन या सिंथेसाइज्ड वॉइस, जैसा कि आपने आमतौर पर मूवीज़ में रोबोट्स को बोलते हुए देखा होगा। Access methods and alternative access options include direct switch and eye gaze access, यानी मुख्तलिफ तरीकों से हम उसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, इनपुट डेटा प्रोवाइड कर सकते हैं। Spelling and or symbol systems to represent languages, physical characteristics like weight and size which affect portability and connectivity to other technologies like the internet and social media। तो इन फैक्टर्स पे डिपेंड करते हुए मुख्तलिफ किस्म की डिवाइसेस मार्केट के अंदर मौजूद हैं और मुख्तलिफ तरह से वो यूज़ की जा सकती हैं। नाउ वी लुक एट दैट हाउ द स्पीच सिंथेसिस वर्क।
speech synthesis is the artificial production of human speech. A computer system used for this purpose is called a speech computer or speech synthesizer, and can be implemented in software or hardware products. A text-to-speech (TTS) system converts normal language text into speech. Other systems render symbolic linguistic representations like phonetic transcriptions into speech. Synthesized speech can be created by concatenating pieces of recorded speech that are stored in a database. Systems differ in the size of the stored speech units. A system that stores phones or diphones provides the largest output range, but may lack clarity. For specific usage domains, the storage of entire words or sentences allows for high-quality output. Alternatively, a synthesizer can incorporate a model of the vocal tract and other human voice characteristics to create a completely synthetic voice output. The quality of a speech synthesizer is judged by its similarity to the human voice and by its ability to be understood clearly. An intelligible text-to-speech program allows people with visual impairments or reading disabilities to listen to written words on a home computer. Many computer operating systems have included speech synthesizers since the early 1990s. A text-to-speech system, or engine, is composed of two parts, a front end and a back end. The front end has two major tasks. First, it converts raw text containing symbols like numbers and abbreviations into the equivalent of written-out words. This process is often called text normalization, pre-processing, or tokenization. The front end then assigns phonetic transcriptions to each word, and divides and marks the text into prosodic units, like phrases, clauses, and sentences. The process of assigning phonetic transcriptions to words is called text-to-phoneme or grapheme-to-phoneme conversion. Phonetic transcriptions and prosody information together make up the symbolic linguistic representation that is output by the front end. The back end, often referred to as the synthesizer, then converts the symbolic linguistic representation into sound. In certain systems, this part includes the computation of the target prosody, pitch contour, phoneme durations, which is then imposed on the output speech. जी, तो हमने ये देख लिया। उसके बाद हमारे पास एक अगला कंसेप्ट है जिसको हम कहते हैं वॉइस क्लोनिंग। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। वॉइस क्लोनिंग में ये होता है कि अगर हमारे पास एक यूज़र की आवाज़ मौजूद है तो हम किसी दूसरे यूज़र की बनी हुई आवाज़ को बिल्कुल एज इट इज़ पहले यूज़र की तरह बना सकते हैं, और ऐसा ही फील होगा कि दूसरे यूज़र नहीं है बल्कि एक ही बंदा है जिसने बात की है। तो हम थोड़ा सा वॉइस क्लोनिंग को देखते हैं कि ये कैसे काम कर रही है। Dear fellow scholars, this is 2-Minute Papers with Károly Zsolnai Fehér. Today, we are going to listen to some amazing improvements in the area of AI-based voice cloning. For instance, if someone wanted to clone my voice, there are hours and hours of my recordings on YouTube and elsewhere. They could do it with previously existing techniques. But the question today is, if we had even more advanced methods to do this, how big of a sound sample would we really need for this? Do we need a few hours? A few minutes? The answer is no, not at all. Hold on to your papers because this new technique only requires 5 seconds. Let's listen to a couple examples. The Norsemen considered the rainbow as a bridge over which the gods passed from Earth to their home in the sky. Take a look at these pages for Crooked Creek Drive. There are several listings for gas station. Here's the forecast for the next 4 days. These take the shape of a long round arch with its path high above and its two ends apparently beyond the horizon. Take a look at these pages for Crooked Creek Drive. There are several listings for gas station. Here's the forecast for the next 4 days. Absolutely incredible. The timbre of the voice is very similar, and it is able to synthesize sounds and consonants that have to be inferred because they were not heard in the original voice sample. This requires a certain kind of intelligence and quite a bit of that. So, while we are at that, how does this new system work? Well, it requires 3 components. 1. The speaker encoder is a neural network that was trained on thousands and thousands of speakers and is meant to squeeze all this learned data into a compressed representation.
In other words, it tries to learn the essence of human speech from many, many speakers. To clarify, I will add that this system listens to thousands of people talking to learn the intricacies of human speech, but this training step needs to be done only once, and after that it was allowed just 5 seconds of speech data from someone they haven't heard of previously, and later the synthesis takes place using this 5 seconds as an input. 2. We have a synthesizer that takes text as an input. This is what we would like our test subject to say, and it gives us a MEL spectrogram, which is a concise representation of someone's voice and the intonation. The implementation of this module is based on DeepMind's Tachotron 2 technique, and here you can see an example of this MEL spectrogram built for a male and 2 female speakers. On the left, we have the spectrograms for the reference recordings, the voice samples if you will, and on the right, we specify a piece of text that we would like the learning algorithm to utter, and it produces these corresponding synthesized spectrograms. But eventually, we would like to listen to something, and for that, we need a waveform as an output. So, the third element is thus a neural vocoder that does exactly that, and this component is implemented by DeepMind's WaveNet technique. This is the architecture that led to these amazing examples. So, how do we measure exactly how amazing it is? When we have a solution, evaluating it is also anything but trivial. In principle, we are looking for a result that is both close to the recording that we have of the target person, but says something completely different, and all this in a natural manner. This naturalness and similarity can be measured, but we are not nearly done yet because the problem gets even more difficult. For instance, it matters how we fit the 3 puzzle pieces together, and then what data we train it on, of course, also matters a great deal. Here you see that if we train on one dataset and test the results against a different one, and then swap the two, and the results in naturalness and similarity will differ significantly. The paper contains a very detailed evaluation section that explains how to deal with these difficulties. The mean opinion score is measured in this section, which is a number that describes how well a... तो हम इसकी डिस्क्रिप्शन में नहीं जाते, ये आपने कम्प्लीटली खुद ज़रा देखना है इस पूरी स्लाइड को। ऑब्जेक्टिव ये है कि हम किस तरह से ऐसी डिवाइसेस प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये ऐसी आउटपुट डिवाइसेस मार्केट में आ रही हैं जो कि एक बंदे की हुई बात को दूसरे बंदे की आवाज़ में कन्वर्ट कर देंगे और हमें फील भी नहीं होगा कि हाउ दिस हैज़ हैपेंड। वर्चुअल रियलिटी अनदर थिंग कि जो इस वक्त हमारे पास मार्केट में या साइंस और टेक्नोलॉजी के डोमेन में हमें नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा काम इसके ऊपर हो रहा है और इसके बहुत सारे फ़ायदे हमें नज़र आ रहे हैं। इट इज़ अ स्टिमुलेटेड एक्सपीरियंस दैट कैन बी सिमिलर टू आर कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द रियल वर्ल्ड। यानी जिस तरह से हम रियल वर्ल्ड में चीज़ों को देखते हैं उसी तरह से कंप्यूटर के ज़रिए से हम वो माहौल पैदा कर दें जहाँ पे हम चीज़ों को देख सकें। Standard virtual reality systems use either virtual reality headsets or multi-projected environments to generate realistic images, sounds and other sensations that stimulate the user physical presence in a virtual environment. In other words, कि एक ऐसा सिस्टम के एक्चुअली वो कंप्यूटर बेस्ड आउटपुट जनरेट हो रही हो, लेकिन आपको ये फील हो कि आप उस सिस्टम का हिस्सा हैं और आप उसके अंदर खड़े हुए चीज़ों के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे इसकी आगे हम थोड़ी सी वीडियोज़ से डिटेल हमारे सामने आएगी। A person using virtual reality equipment is able to look around the artificial world, move around it, and interact with the virtual features or items. The effect of commonly created in 2 ways. ये इफेक्ट है 2 तरह से। कौन से? By virtual reality headsets, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस खातून ने एक virtual reality headset लगाया हुआ है, इस डॉक्टर ने एक virtual reality headset यूज़ किया हुआ है, या through specially designed rooms with multiple large screens. 2 बड़े तरीके हमारे पास मौजूद हैं। वर्चुअल रियलिटी टिपिकली इनकॉर्पोरेट्स ऑडिटरी एंड वीडियो फीडबैक बट मे आल्सो अलाउ अदर टाइप्स ऑफ सेंसरी एंड फोर्स फीडबैक थ्रू हैप्टिक टेक्नोलॉजी। अब ये हैप्टिक टेक्नोलॉजी क्या है? आई वुड रिकमेंड यू पीपल टू गो ऑन द इंटरनेट एंड सर्च इट व्हाट इट इज़। इसकी एप्लीकेशंस क्या है? एनॉर्मस एप्लीकेशंस है हमारे पास वर्चुअल रियलिटी की, जिसमें आर्किटेक्चर एंड अर्बन डिज़ाइन है, हेल्थ केयर के अंदर, डिजिटल मार्केटिंग में, एजुकेशन, ट्रेनिंग, इंजीनियरिंग, एंटरटेनमेंट एंड मैनी मोर जगह पे इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे हम थोड़े से कुछ वीडियोस को देखेंगे जिसमें कि वर्चुअल रियलिटी को हम यूज़ करें, उसकी डिटेल हम देखेंगे कैसे ये काम कर रही है और किस तरह से हमें इसका बेनिफिट हो सकता है।
Virtual reality is a relatively new multi-billion-dollar industry that is growing fast every year. A new study suggests that virtual reality's market worth will reach over $100 billion in 2027. Many people think virtual reality is mainly used for games, but a large portion of the content in VR is not game-related. Virtual reality has dominated tech headlines in recent years, and its applications have engulfed a variety of non-related fields including the military, education, medical training, mental health, sports, etc. But what exactly is virtual reality? As the name suggests, VR is basically a simulated reality from a system that uses headsets to generate realistic images, sounds, and other sensations that simulate a user's physical presence in a virtual world. A person using virtual reality equipment is able to look around the artificial world, move around in it, and interact with its virtual features. The VR headset consists of a head-mounted display with a small screen in front of the eyes and typically incorporates auditory and video feedback. But new and improved haptic technologies may enable other types of sensory-enforced feedback, like the sense of touch or smell, and even the simulation of gravity where you can feel the weight of an object. This is particularly useful for training soldiers for combat situations where they can reenact a dangerous event or engage with an enemy, of course without the risk of death or serious injury. VR has also been adopted in education for learning and teaching. Students can interact with each other in a 3D environment. They can take virtual field trips, for instance, to museums, explore the solar system, and go back to different eras. Medical students use VR to practice surgeries on virtual patients, which allows them to develop and sharpen their skills for real-world situations. Virtual reality has also been used to treat post-traumatic stress, anxiety, phobias, and even depression, where patients are exposed and reenact traumatic events under safe and controlled conditions in which they come in contact with the things they fear. यहाँ पे हम वर्चुअल रियलिटी की एक और एग्जांपल देखते हैं कि वर्चुअल रियलिटी एक्सपीरियंस क्या है और किस तरह से ये मुख्तलिफ सेक्टर्स में हमें हेल्प आउट कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसने जब गॉगल्स पहने हुए, ग्लासेस पहने हुए, तो उसको इन्वायरमेंट किस किस्म का नज़र आ रहा है, लेकिन हकीकत में वो कहाँ खड़ा हुआ है। हकीकत में वो अपने लैब के अंदर ही मौजूद है, लेकिन वर्चुअल रियलिटी का जो इन्वायरमेंट है वो उसको दिखा रहा है कि वो किसी पहाड़ी इलाके में मौजूद है जहाँ पे बहुत सारे ख़तरे और डेंजर्स मौजूद हैं। तो जब हमारी आँखों पर उस किस्म का इफेक्ट आता है तो फिर हमारा इंटरेक्शन भी उसी किस्म का ही डेवलप होना शुरू हो जाता है। Now we look at another kind of output, that is a 3D wall projection. बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक्सपीरियंस है और दुनिया में बहुत सारी जगहों पे इस्तेमाल हो रहा है। Ladies and gentlemen, Lexus welcomes you to Earth Night, our unconventional approach to celebrating the planet, inspired by our dynamic new hybrid, the CT200H. In the spirit of all things unconfined,
we've got an amazing performance that will be followed by a CT art installation piece created by Trevor Jackson. So, if you're ready, let's kick off the first ever Earth Night celebration. तो इस तरह आप देख सकते हैं कि कैसे हम मुख्तलिफ आउटपुट डिवाइसेस और मुख्तलिफ आउटपुट तरीके इस्तेमाल करते हुए कितने ज़बरदस्त और वंडरफुल किस्म के एक्सपेरिमेंट्स कंप्यूटर के साथ किए जा सकते हैं या कंप्यूटर आउटपुट हो सकते हैं। Here is another example, AlloSphere। इसको देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। Represents some kind of nutrient in the system. These sort of pink stick figures are like plants. They output the orange particles, which are like carbohydrate. They're a food source to these sort of dragonfly, butterfly-like creatures, which are the animals in this ecosystem. Every sound that you hear is a very, very short triggered sample, a grain, as we call it in sound synthesis, grain synthesis, that represents some kind of life event in the life cycle of these animals. So there's a certain sound that means that an animal was born, a certain sound means that an animal ate something, a certain sound that means that an animal died. If they don't eat enough, then they don't survive. So around the plants, if there's enough food, then there can be a little population explosion, which is sort of what we're in the middle of right now. But if the animals are on their own without any food, you can see them eating. सो ये आपके लिए एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज होगी कि अगर आप ज़रा जाके एलोस्फीयर को मज़ीद एक्सप्लोर करें कि क्या चीज़ है और किन एरियाज़ में ये काम कर रहा है और कहाँ पे ये हमें बेनिफिट दे सकता है।
ones around here. Finally, we come toward another kind of output, एक technique जिसको हम holography बोलते हैं. ठीक, first we see that how the holography is working. आप देखेंगे ये सारा कुछ जो है वेव्स के ज़रिए से, रेज के ज़रिए से प्रोड्यूस किया जा रहा है. एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है, एक जस्ट आपके पास प्लेन फ्लोर है और उस फ्लोर के ऊपर जो है कंप्यूटर के ज़रिए से एनिमेशन प्रोड्यूस की जा रही है. इसको हम नॉर्मली 7D होलोग्राफी टेक्नोलॉजी भी कह सकते हैं. होलो लेंसेज आमतौर पे होलोग्राफी टेक्नोलॉजी के साथ होलो लेंसेज भी यूज़ किए जाते हैं. इट्स अ पेयर ऑफ मिक्स्ड रियलिटी स्मार्ट ग्लासेस डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड बाय द माइक्रोसॉफ्ट. होलो लेंसेज वाज द फर्स्ट हेड माउंटेड display running the Windows mixed reality platform under the Windows 10 computers operating system. The tracking technology used in HoloLenses can trace its lineage to Kinect device के बारे में हम पहले से पढ़ चुके हैं. ठीक, and add on that is something input device and add on for the Microsoft Xbox game console that was introduced. Now we look at that कि how the HoloLenses technology is working. HoloLenses कैसे इस्तेमाल हम करते हैं. आपने देखा कि किस तरह से हम HoloLenses यूज़ करते हैं वर्चुअल रियलिटी के ज़रिए कितनी ज़बरदस्त किस्म के इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं और उनके अंदर हम काम कर सकते हैं. देन वी हैव द कंसेप्ट ऑफ एक्सटेंडेड रियलिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक और डोमेन, और हम देखते हैं कि ये कैसे काम कर रही है. For 14 years, Accenture has been presenting its technology vision. We have used whiteboards, slides, video, PowerPoint. We have used the web and social media. This year, we tried something new. One of today's most exciting technology trends, extended reality. Extended reality gives us a peek into the future. It transforms data and information into memorable experiences. And we can take that data and give it meaning. Express it in ways that are clear and captivating. People don't remember data, they do remember stories. In developing the experience, we began with an easy-to-replicate setup. Easy because we wanted to make it widely available and roll it out quickly. We broadcast from a mobile device to a screen, creating a sort of PowerPoint on steroids. The graphics, the interface, the processing, everything is constantly evolving. It gives us a glimpse into the future of how shared learning experiences might work.
We partnered with Microsoft and had early access to their mixed reality capture studio. 106 cameras capture a true life-size hologram of the presenter. It works on a big stage, but also in a small conference room. It can be deployed at client sites across the globe. We are no longer looking at data, we are looking at information in action. Any device can connect to the experience. Everything from your phone and computer to a HoloLens and whatever comes next. Accenture is present in over 100 countries, where we were able to make this technology available in every single one of them. It's a frictionless installation process. Point and download. Point your phone at the QR code and the app downloads. A separate PDF contains all the learning materials. You can be up and running from any location instantly. Feedback has been wonderful. We receive lots of enthusiasm internally and externally. Our clients now want to try extended reality for themselves. At our studio, we combine technical expertise and the power of story to prototype the future. We believe that extended reality provides a multifunctional digital platform. तो इस तरह से आप एक्सटेंडेड रियलिटी को यूज़ करके भी बहुत अच्छे और बहुत इंटरेस्टिंग किस्म के टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। आप जिस डोमेन के भी स्टूडेंट हैं, आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि किस तरह से ये आपको हेल्प आउट कर सकता है आपके सब्जेक्ट को समझने में, आपको अपने कोर्स को अंडरस्टैंड करने में और आपको अपने कंटेंट्स को ज़्यादा इलेबोरेटिव वे में देखने के लिए। फाइनली वी लुक एट एन ओवरव्यू ऑफ द इमर्सिव टेक्नोलॉजीज़। क्या है, कैसे काम कर रही हैं, इसकी डिटेल को हम ज़रा देखते हैं। इमर्सिव टेक्नोलॉजी के अंदर हमारे पास तीन बड़ी चीज़ें मौजूद हैं, जिसको हम ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी और मिक्स्ड रियलिटी कह सकते हैं। और ये किस तरह से काम कर रही हैं, किस तरह से इनकी वर्किंग चल रही है, ये वीडियो थोड़ा सा आपको वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करेगी। Hey everyone, today we are going to talk about the mind-blowing technology which is revolutionizing the present and the future. That is none other than immersive technologies. Immersive technologies comprising of virtual reality, augmented reality and mixed reality are amongst the fastest growing and fascinating technologies today. So what is immersive technology? To put it in a nutshell, immersive technologies create or extend reality, and this is done by immersing the user in a digital environment having applications in different domains. This technology is gaining momentum with every passing day and hour, transforming and helping us reimagine the future. Let's start with virtual reality. Virtual reality uses VR headsets to create a simulated environment and helps an individual to immerse into it to experience an entirely different reality. However, the historical journey of virtual reality began back in the 1800s. This marvelous idea has been evolving from the time practical photography came into existence. Morton Heilig invented the first VR device called Sensorama in 1957. His multimedia device, the Sensorama, is considered one of the earliest VR systems. However, the term virtual reality was coined later by Jaron Lanier in 1987 during his intense research on this evolving technology. A lot of companies are investing billions of dollars in the VR sector. Some of the best VR products are Oculus Quest, Nintendo Labo VR Kit, Sony PlayStation VR, Lenovo Mirage, and many more. These gadgets enable an individual to immerse in a digital environment to experience a world which is different from reality. You might think VR is all about gaming, isn't it? But the potential of VR doesn't stop there. It is revolutionizing many other industries like education, military, medicine, and sports, to name a few. Here are some examples of VR in real life. Class VR is an innovative new concept in the educational industry which uses VR tech to raise the engagement and knowledge retention for students of all ages. Class VR uses VR headsets with a user-friendly interface for both students and teachers, gesture controls, and embedded educational resources. Facebook is coming up with a new idea called Facebook Horizon, which is an ever-expanding VR community where you can explore, play, and create. It helps you to defy physics and reality and experience the impossible.
And we also have VR360, which is a 360-degree audiovisual simulation. It allows the user to look around in any direction, just like how they look and observe things in real life. You can experience anything from standing on top of a pyramid to enjoying Tomorrowland sitting at home. Isn't that wonderful? We can't end the topic if we didn't highlight the role of VR in gaming. A great take on this is the movie Ready Player One by Steven Spielberg. The film is set in the year 2045 when the world is on the brink of chaos and collapse. But humans have found salvation in a virtual reality universe where they could make the impossible possible. Let's hear what Steven himself feels about the VR universe. World that we would someday be able to escape into. A world that, we leave our world, but we don't leave our world. We don't have to walk 5 feet to leave our अपने लेक्चर को छोटा रखने के लिए मैं आपको इतना ही वीडियो दिखा पा रहा हूँ, बाकी वीडियो आप इस लेक्चर के साथ देख सकते हैं। तो यहाँ से हमें समझ आ रहा है कि कितनी किस्म के मुख्तलिफ और बड़े फैसिनेटिंग किस्म के आउटपुट डिवाइसेस क्रिएट हो रही हैं हमारे कंप्यूटर की, और उनसे क्या क्या काम लिए जा सकते हैं। आज का लेक्चर यहीं तक। आई होप कि जो कंसेप्ट प्रेजेंट किए गए हैं आपको समझ आ गए होंगे। अल्लाह हाफिज़।